श्रीमन्नारायणीयम् अथ एकषष्टितमं दशकम्। विप्रपत्नी अनुग्रहः। ततश्च बृन्दावनतोऽतिदूरतो वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः। हृदन्तरे भक्ततरद्विजाङ्गना कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन्। ततो निरीक्ष्य शरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षुदितं तृषाकुलम्। अदूरतो यज्ञपरान् द्विजान् प्रति व्यसर्जयोधि दिवि याचनायतान्। गतेष्वथोतेष्वभिधायतेऽभिधां कुमारकेशो दनयाचिषु प्रभो। श्रुतिस्थिराप्यभिनिन्युरश्रुतिं न किञ्चिदूचुश्च महीसुरोत्तमा। अनादरात् खिन्नधियो हि बालका समाययुर्युक्तमिदं हि यज्वसु। चिरादभक्ताः खलु ते महीसुराः कथं हि भक्तं त्वयि तैर्समर्प्यते। निवेदयध्वं गृहिणी जनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुलायिमाः। इति स्मितार्द्रं भवतेरितागता ते दारकादार जनं ययाचिरे। गृहीतनाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुला चतुर्विधं भोज्य रसं प्रगृह्यताः। चिरन्द्रतत्त्वप्रविलोकनाग्रहा स्वकैर्निरुद्धा अपि तूर्णमाययुः। विलोलपिञ्चं चिकुरे कपोलयो समुल्लसत्कुण्डलमार्द्रमेक्षिते। निधाय बाहुं सुहृदं ससीमनि स्थितं भवन्तं समलोकयन्तताः। तदा च काचित्त्वदुपागमोद्यता गृहीतहस्ता दयितेन यज्वना। तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसा विवेश कैवल्य महोकृतिन्यसौ। आदाय भोज्यान्यनुगृह्य ता पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयोञ्जतीर्गृहम्। विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमा चकतभर्तॄनपि तास्वगर्हणान्। निरूप्य दोषं निजमङ्गनाजने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः। प्रबुद्धतत्त्वैस्त्वमभिष्टुतो द्विजैर्मरुत्पुराधीशा निरुन्धे मे गदान्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।